हेलो एवरीवन। तो आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे विच आई थिंक आर ग्रेट बिजनेस मॉडल्स। बहुत अच्छा इनमें ग्रोथ दिख रहा है। सो टू ऑफ देम आर सकर हेल्थ केयर एंड द अदर वन इज वी मार्क। सो विल टॉक अबाउट सकर हेल्थ केयर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। फर्स्ट तो ये डाइवर्सिफाइड थे एंड दे यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ एपीआईज एंड ड्रग्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स। बाद में इन्होंने एक काम ये कर दिया कि दे थॉट दैट दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस ग्रोथ। मतलब द बिजनेस वाज नॉट ग्रोइंग। अगर आप उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो सेल्स उतनी बढ़ नहीं रही थी। इट वाज स्टैग्नेंट, इट वाज जस्ट ग्रोइंग बाय मे बी 10-15% हियर एंड देयर। बट last 1 year में they have generated immense profits because 2-3 years back they decided that they will start manufacturing oncology related drugs। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो यूज़ होते हैं ड्रग्स, वो उन्होंने सोचा कि वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये 3-4 साल पहले इन्होंने सोचा एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस। सो वी आर एबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ दैट नाउ। तो अभी वो जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने उस टाइम सोचा था, तो उसका फ़ायदा अब हमें दिख रहा है इन द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। सो ग्रोथ इज इमेंस, रिजल्ट्स हैव बीन रियली गुड। और सकर हेल्थ केयर अब ये कह रहा है कि उन अभी तो 250 करोर्स का उन्होंने रेवेन्यू किया है फॉर द फुल ईयर। एफ ठीक है, FY 26 के लिए। ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि बाय FY 28 दे आर गोइंग टू डू 500 करोड़ रेवेन्यू, विच इज डबल ऑफ दैट। सो 2 years में डबल हो जाता है, विच इज ऑलमोस्ट अ 40% की, विच इज वेरी गुड। तो Sakar Pharma is saying that, and then beyond that, after reaching that 500 crore ka milestone, they are looking at 1,000 crore in revenue, which is again very good. So they have finally found a niche for them। और फिर ये क्या करते हैं कि they have exports to UK and Europe also, and of course about 50 countries में ये अपना drug supply करते हैं। They sell that, so it is very good। and the another part of this is that the margins are very high, 20 to 25% का margin मिल जाता है। So it's not a low margin product। Oncology is something that is highly sought of after, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है, and then it's a very complex drug। So they're doing something which is very complex, that is why you find that the margins are also high। and unfortunately आजकल you find a lot of people having this oncology issues, one can say for many reasons, but but the business is doing great। and आई थिंक द गाइडेंस इज ग्रेट। तो अभी भी पी आज अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, इट्स अबाउट 60। फॉरवर्ड पी लुक्स इवन चीप। आई थिंक 60 का फॉरवर्ड पी वुड बी 40% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 35-36 का आता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ 40% ग्रोथ। देन आई थिंक यू कैन होल्ड दिस एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। इट्स अ क्लीन बिजनेस। और अभी तो दिख रहा है कि टेलविंड भी है। सो अगेन Sakar Healthcare is very good. It's only a 800 crore market cap company, listed है, it is not a SME stock, so liquidity का कोई issue नहीं। You can buy one stock, 5 stocks or 10 stocks, as per your appetite। But then again, a good business model। मतलब pharma में I think there are only very few stocks that really are having that kind of growth potential। एक तो Senoris होता है, दूसरा Cupid is doing well। Again, but then Cupid का valuation थोड़ा अभी ज़्यादा लगता है, it's run up quite a bit। So but I'm just saying that few stocks that are doing well। and Senoris has done well। Senoris तो मैंने discuss किया था। Of course these are not recommendation, but I'm just looking at the pharma as a theme। and this is again a lot of interest of DIIs and FIs is there in this Sakar healthcare। तो अगेन वेल सॉट आफ्टर। और ये रिटेल का भी होल्डिंग कम है, तो उतना वॉलिटिलिटी नहीं होगा। ऑल्दो इट्स अ स्मॉल कंपनी, 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है, बट देन प्रोस्पेक्ट्स लुक गुड। सो दिस इज समथिंग यू शुड ट्रैक, एंड आई थिंक दिस कैन डू वेरी वेल इन द फ्यूचर। एंड नेक्स्ट इज वी मार्क। वी मार्क के बारे में मैंने बात की है। एंड देन वी मार्क इज इनटू वायर्स एंड केबल्स। इट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, और लास्ट 1 ईयर अगर आप देखोगे तो स्टॉक इज गॉन अप बाय 5 times। दैट इज क्वाइट अ लॉट। ठीक है, अब स्टॉक प्राइस तो ठीक है, बट द बिजनेस इज ऑल्सो डूइंग वेल। तो रिसेंटली प्रेजेंटेशन में उन्होंने गाइडेंस दिया है FY 30 तक। दे सेइंग दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय 4 times। दैट मीन्स 10 लाख करोड़ किलोमीटर की कैपेसिटी वो कर देंगे। अभी 2.5 लाख करोड़ है, उसका 10 लाख करोड़ कर देंगे, 4 times बढ़ा देंगे। सो आई थिंक द स्टॉक कैन इजीली गो अप बाय 4-5 times अगेन। थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है तो 5 times आराम से हो जाएगा। द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज स्टिल नॉट मच। 3,800 करोड़ के आसपास है, 3,700-800 करोड़ के आसपास है, 3,800। सो दैट इज लुकिंग
वेरी गुड वी मार्क, इट इज़ इन दैट स्वीट स्पॉट। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा हो सकता है, टेलविंड है। तो यहाँ मुझे लगता है कि यू कैन ऑलवेज लुक एट दिस बिजनेस। अगेन द ओनली इशू इज दैट एसएमई स्टॉक है, उसको लॉट लेना पड़ता है। यू हैव टू बाय एटलीस्ट 250 शेयर्स ऑफ दिस, एंड देन ओनली यू गेट दिस वी मार्क का शेयर। सो आई थिंक दैट इज वाई आई डिड नॉट बाय दैट लास्ट टाइम। मतलब जब उसको ट्रैक किया था, मैंने नहीं लिया इसको अपने पोर्टफोलियो में, अगेन बिकॉज आई थॉट दैट एसएमई एंड लिक्विडिटी इशू, बट देन अगेन द बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। सो अगर किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, and if it is only maybe a percent or a half percent of your allocation, then maybe you can take some chance and then get into such kind of a business. But then I think fundamentally बहुत अच्छा है, 530 तक अगर 4-5x बना देता है तो nothing like it. So VMark is doing very well. That is what it is. So ये दो businesses है, I think you should track them. A lot of scope in mid cap and small cap. You should keep tracking, and there are a lot of businesses you can इन्वेस्ट इन, और ट्रैक करते रहना है उनको, और जितने ऑप्शंस आप ढूंढोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इफ अ बिजनेस इज डूइंग बैड, देन यू कैन जस्ट सेल एंड यू कैन जस्ट मूव ऑन टू सम अदर बिजनेस। सो एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, देन I think you can always make more returns. 20-25% is not very difficult, even in this kind of a market, because stocks have gone up. अब ये VMark तो 4 times हो गया 1 year में, so definitely you can make returns. This is just a myth that returns नहीं बनता है ऐसे market में. I think stock specific, if you are very good, then you can still make a lot of money. There's no issue. So this is a common quote by रमेश दमानी. He says that हमेशा एक bear market में भी हमेशा कहीं ना कहीं bull run चलता रहता है. So you need to find uh, that sweet spot. You need to find those businesses which are doing well even in this kind of market, and you can make a lot of money. So be very aware, keep reading, keep sharing. Or maybe you can also have a group where you share ideas. So I keep coming with these names, mostly which are quality clean names जिसमें growth होता है, so that you also can go out and then research on this. Not any recommendation, but then you can look at these kind of business models, track them and learn from them, read the con calls and ppts. And I think management is the best who can tell you about the business more than anyone else. So just trust the management, and then obviously you cross check if the execution is on par, and then if it keeps executing, the stock keeps moving and you keep buying more of it. तो जब stock ऊपर जाता है तभी लेना है. You don't buy a stock when it is going down because it is cheap. That does not work in the stock market. कोई अगर low p stock है तो it is because of the quality, and all these stocks what I've told you, they are having a high p, and it is because of the growth. तो market का perception ही है कि ये grow करेगा, तो वही करना है हमें. We have to buy quality, and it is always quality that is going to outperform the market. Quality will last in these kind of market जहाँ पे इन्फ्लेशन है, वॉर है, इतने इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वालिटी बिजनेस है तो वो ये सबको झेल पाएगा. सो दैट इज द ओनली रीजन वी बाय अ क्वालिटी बिजनेस, so that it can last and your capital is very well protected and it keeps growing. So that is all for today. और ये दो stocks track करना, इसके बारे में पढ़ना, and I'm sure that you learn a lot from these kind of businesses. So these kind of businesses generally are to be picked, I feel, and growth stocks ऐसे ही होते हैं, and then you can make a lot of money in this. Yes, that is what it is. No recommendations, again, this is only for education purpose. So yes, thank you.